In today's lecture, we will discuss about circular linked list. Before this, we already have discussed in very detail about two types of lists that are single linked list and double linked list. Let us have a short review of these two. Linked list is collection of nodes. Is a series of nodes. And what is node? A node is collection of data as well as link. Node consists of two parts. One is data part that is used to store the concerned data, and the other is link part. This link part is basically a pointer to store the address of the next node. The pointer part of the node has the address of the node that will come after that. So in single linked list there is one pointer, but in double linked list there are two pointers in a node. So in double linked list, the next pointer will store the address of the node that will come next to the current node, and the previous pointer will store the address of the node that comes before that current node. So these nodes are scattered in the memory, but when proper links are established between these nodes, then we have a proper linked list. In single linked list, there is only one reference, there is only one link, a link that is needed to be connected. But in double linked list, two links are to be maintained. In double linked list, every node has two pointers. One pointer points to the next node and other pointer points to the previous node. So this is the advantage of the double linked list, that the list may be traversed in reverse order. Single linked list is always traversed from head to tail in forward direction, but the double linked list may be traversed in both directions, from head to tail or from tail to head, because through these links, through these pointers, we may move in any direction. Today we will discuss about circular linked list. This is another type of linked list. So let us have a brief review of the contents that we will discuss today. We will have overview or introduction of circular linked list. Then we will see the difference between linear linked list and circular linked list. After that, we will have the discussion of types of circular linked list. Then we will have a look of, over advantages and disadvantages of linked list. Then we will see different operations that will be performed on circular linked list. And after that, we will have some applications of circular linked list. This is an overview of a linked list. As I have told you that linked list is basically collection of nodes that are linked with each other. So this link is basically a reference, an address of the next node. So a node has basically two parts. One is data part and another is link part, or the address part, that actually stores the address of the next node in single linked list. But in double linked list, this next address part is used to store the address of the previous node. What is a circular link? Before having the discussion of circular linked list, let us see the single linked list or double linked list. You can see from here that in single linked list, the last node points to null. This is very important to think or see कि जो लास्ट नोड होता है ये नल को पॉइंट कर रहा होता है. नल का मतलब देयर इज नो नेक्स्ट नोड आफ्टर इट. मतलब
हम क्या करते हैं, इसके लिंक पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस डालते हैं ना। और अगर कोई नोड है ही नहीं इसके बाद, तो इसका मतलब है कि वह उसका एड्रेस पार्ट नल। So in single or double linked list, the last node points to none. But in circular linked list, uh, there is no null path. Circular linked list is a variation of linked list in which the first element points to the next element and the last element points to the first element. Circular, circular means कि एक साइकिल बन जाता है कि देयर इज नो वे टू एग्जिट, यानी कोई इसमें फर्स्ट नोड या लास्ट नोड नहीं होता, क्योंकि क्योंकि जो लास्ट नोड होता है वो बजाय नल को पॉइंट करने के इट पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड। मतलब लास्ट नोड जो है सिंगल या डबल लिंक लिस्ट में हमारे पास लास्ट नोड नल होता है मतलब लास्ट नोड के बाद कोई नोड नहीं है। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो टेल वाला नोड होता है दैट इज लास्ट नोड, वो उसमें हम एड्रेस डाल देते हैं फर्स्ट नोड का, तो एक तरह से फिर वो एक सर्कल बन जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट। बोथ सिंगली एंड डबली लिंक लिस्ट कैन बी मेड इनटू अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है ये सिंगल भी हो सकती है और ये डबल लिंक लिस्ट भी हो सकती है। सिंगल लिंक लिस्ट के नेक्स्ट पार्ट में अगर आप फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दें तो वो आपकी सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट बन जाती है। इसी तरह से डबल लिंक लिस्ट के टेल वाले नोड में आप उसके फर्स्ट नोड यानी हेड का एड्रेस डाल दें और हेड के नेक्स्ट पार्ट में, सॉरी प्रीवियस पार्ट में आप टेल का जब एड्रेस डाल देती हैं तो वो हमारे पास वो जो डबल लिंक लिस्ट होती है वो सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट बन जाती है। So circular linked list can be used to help traverse the same list again and again repeatedly. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आमतौर पे हमारे पास लिस्ट के लास्ट नोड नल होता है, जब नल आ जाए तो इसका मतलब है लिस्ट एंड हो गई है। बट इन सर्कुलर लिंक लिस्ट देयर इज नो नल, तो इसका मतलब है कि एक ही लिस्ट को आप बार बार ट्रेवर्स कर सकते हैं एंड दिस इज वेरी यूजफुल एंड एडवांटेजेस in some applications that we will discuss later on. So in this example you can see that this is the first node जो कि head है और इसका एड्रेस क्या है 1001, इसका डेटा पार्ट 10 है। नेक्स्ट नोड है इसका एड्रेस 1004, the next is 1008 and after that the last is 1012. This is the address of the last node. But instead of saving null in its link part, we have stored the address of the first node that was 1001. तो फर्स्ट नोड का एड्रेस अगर हम इसके लिंक पार्ट में स्टोर करा दें तो अब ये सिंपल सिंगल लिंक लिस्ट की बजाय सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट बन गई। यू कैन सी फ्रॉम हियर कि जब आप लास्ट नोड टेल पे पहुंचते हैं तो अब इसका जो लिंक पार्ट है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। So after this tail or last node, you will move to the first part or the head of the list. So after traversing all these nodes in sequence, when you reach at this node that is tail, then you this tail again points to the first node. So again you will move here. So in circular linked list, yeah, you have the opportunity to traverse the nodes of the list again and again. The fun fact about circular linked list is that if you are worried about its implementation, then you need not to do that. You need not to worry about that because instead of placing null at the last node's address field, you are placing the address of very first node. So there is no problem in the implementation of circular linked list. सिर्फ हमने क्या करना है, लास्ट जो नोड है जो टेल है हमारे पास उसके लिंक पार्ट में नल ऐड करने की बजाय हम फर्स्ट नोड यानी कि हेड का एड्रेस डाल देते हैं तो वो हमारे पास लिंक लिस्ट बन जाती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाती है। बाकी सारा काम हमने वैसे ही करना है जो जैसे हमने पहले लिंक्स एस्टैब्लिश किए। Now there is a difference between circular linked list and linear linked list.
क्या होता है कि सर्कुलर linked list may be a natural option to represent arrays that are naturally circular, a set of processes that should be time shared. In this application, a pointer to any node serves as a handle to the whole list. अब सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि हमारे पास किसी भी कोई भी आप किसी भी नोड से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई फर्स्ट या लास्ट नोड नहीं होता। एक सर्कल में सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं, तो किसी भी नोड से स्टार्ट करके आप लिस्ट को ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट इन सिंगल लिंक लिस्ट देयर इज अ हेड एंड अ टेल एंड यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हेड। With a circular list, a pointer to the last node gives easy access also to the first node by following one link. Thus, in applications that require access to both ends of the list, a circular structure allows one to handle the structure by a single pointer instead of two. तो अगर आपने किसी भी लिस्ट को बार बार ट्रेवर्स करना है तो उसके लिए जो अच्छा ऑप्शन है वो सर्कुलर लिंक लिस्ट है, जो कि आपके पास सिंगल सिंपल जो डबल या सिंगल लिंक लिस्ट है उसमें नहीं होता। The simplest representation of any empty circular list is a null pointer indicating that the list has no node. Without this choice, many algorithms have to test for this special case and handle it separately. By contrast, the use of null to denote an empty linear list is more natural and often creates fewer special cases. अब हमारे पास जो सिंपल सिंगल या डबल लिंक लिस्ट होती है उसमें जब हम कहते हैं कि एम्प्टी हमारे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो इसका मतलब ये है कि उसका जब हमारे पास नोड हमारे पास नल है तो इसका मतलब है वो लिस्ट एम्प्टी है। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्योंकि हमारे पास नल होता ही नहीं है, दैट्स व्हाई एम्प्टी लिस्ट का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। देयर आर टू टाइप्स, सिंगल सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट। You can see from here that in single circular list, there is only one link or one pointer that always points to the next node. The last node points to the first node and there is only one link between the nodes of the link. In single circular link list, there is only one link that points only to the next node. But in the link part of the last node, the address of the first node is stored. So the last node will always point to the first node. But in double linked list, the last node points to the first node and there are two links between the nodes of the link. यहाँ से देखिए लास्ट नोड जो है वो फर्स्ट नोड को तो पॉइंट कर ही रहा है, लेकिन फर्स्ट नोड का जो प्रीवियस पार्ट है वो लास्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो इस तरह से जो है वो डबल सर्कुलर लिंक लिस्ट का कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। Now the advantages of circular linked list. Any node can be starting point. We can traverse the whole list by starting from any point. Any node can be starting point. We can traverse the whole list by starting from any point. We just need to stop when the first visited node is visited again. जैसा कि पहले मैंने आपको बताया सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई नल पॉइंटर नहीं होता, तो इसका मतलब है कोई स्टार्टिंग या एंडिंग नोड नहीं होता। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी नोड, लेकिन आपने स्टॉप कब करना होता है कि जब एक पहले से विजिट किया हुआ नोड जब आप दोबारा पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करने के बाद वो जो फर्स्ट विजिटेड नोड है जब दोबारा आप उसको एक्सेस करेंगे तो एट दैट टाइम यू विल स्टॉप। The second advantage of circular linkage is that lists are useful in application to repeatedly go around the list. For example, when multiple applications are running on a PC, it is common for the operating system to put the running applications on a list and then to cycle through them. अब क्या होता है कि जो आपका विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है कि यू कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम। क्या होता है कि आप जो है वो जैसे आपने अपना
कोई वीडियो प्ले की हुई है, साथ ही आप कुछ कंपोजिंग कर रहे हैं, साथ ही आप उसके अलावा आप जो है वो उसमें सर्चिंग कर रहे हैं या कोई गेम प्ले कर रहे हैं, तो यू आर परफॉर्मिंग 4 ऑपरेशंस एट अ टाइम। अब क्या है कि CPU जो होता है वो एट अ टाइम 1 आपका ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बट इट गोज़ ऑन switching from one location to another, from one you can say of application to other. तो हर एप्लीकेशन को एक स्पेसिफिक टाइम स्लाइस देने के बाद that operating system moves again to the first application and then provides same running time to all the applications and so on. तो इस केस में आपकी जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है दैट इज वेरी बेस्ट ऑप्शन कि आप एंड वाले नोड पे पहुंच के फिर आप फर्स्ट वाले नोड पे फिर फर्स्ट वाली एप्लीकेशन पे मूव करती हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस को मल्टीटास्किंग प्रोवाइड करने के लिए सर्कुलर लिंक लिस्ट यूज करता है। In multiplayer game, all players are kept in circular linked list. After a player has taken its turn, it advances to the next player in the list and this process continues in a circular fashion. Similarly, circular double linked lists are used for implementation of advanced data structure like queue and Fibonacci heap. Disadvantages of circular linked list. Depending on the implementation, inserting at start of list would require doing a search for last node which could be expensive. सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक स्टार्टिंग या एंडिंग नोड नहीं होता, तो किस स्पेसिफिक नोड तक पहुंचने के लिए हमें जो है वो एग्जॉस्टिव सर्च करनी पड़ सकती है, दैट इज डिसएडवांटेज। Similarly, finding end of the list and loop control is harder because no null marker is there. So this is the drawback of circular linked list. Now there are different operations that are performed on single circular linked list. We can perform insertion, deletion, and we can traverse to display the data. In insertion, there are three types of insertions: insert at first, insert at last. Insert at last, insert after constant, मतलब किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करना हो। तो these are three options. Insertion after constant in circular linked list is exact same, मतलब किसी स्पेसिफिक नंबर के बाद आपने किसी स्पेसिफिक नोड के बाद आपने इंसर्ट करना है। इंसर्शन एट फर्स्ट में क्या करते हैं आप कि आपने जो पहला नोड यानी स्टार्ट या जो आपने जिस नोड से आपने ट्रैवर्सिंग स्टार्ट की है वहाँ से आपने उसके बाद आपने कोई नोड इंसर्ट करना है। तो दिस इज आवर इनिशियल सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसमें हमारे पास ये नोड है जिसका डेटा 5 है और इसमें फिलहाल हमारा नल है, क्योंकि अभी जब हम इसे लिस्ट में ऐड करेंगे तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें डेटा को ऐड करना, लिंक को डालना है। अब ये हमने नोड जो क्रिएट किया है इसको हम लिस्ट में ऐड करेंगे कि यहाँ हमने 10 के बाद इसको 10 से हमने पहले इसको इंसर्ट करना है, इंसर्ट एट फर्स्ट मीन फर्स्ट नोड से पहले। तो ये इसको हमने स्टार्ट किया कि हमारा जो लास्ट नोड था उसको हमने कनेक्ट किया अपने न्यू नोड के साथ और फिर न्यू नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पहले जो स्टार्ट पे नोड था उसका लिंक डाल दिया। यू कैन सी फ्रॉम हियर कि ये जो हमारा 5 वाला नोड था इसमें हम अपने लास्ट वाले जो हमारा लास्ट नोड था उसके लिंक पार्ट में हम फर्स्ट वाले नोड यानी जो हमारा अभी इंसर्ट करना है उसका एड्रेस डाल देंगे और जो अभी न्यू क्रिएट किया है उसके नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट वाले का एड्रेस डाल देंगे। तो इस तरह से ये इंसर्ट एट फर्स्ट मतलब हेड से पहले इंसर्ट हो जाएगा। इसके लिए जो एल्गोरिदम है क्या है कि हमने एक स्ट्रक्चर नोड डिक्लेयर करना है और टी को हमने कहना है स्टार्ट, मतलब टी से हमने स्टार्ट करना है, एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे और फिर चेक करेंगे स्टार्ट इज इक्वल टू नल, सेट एन इज इक्वल टू एन, स्टार्ट सॉरी सेट स्टार्ट इज इक्वल टू एन।
एंड देन सेट स्टार्ट नेक्स्ट इक्वल टू स्टार्ट, यानी स्टार्ट के नेक्स्ट में हमने स्टार्ट ऐड कर देना है अगर वो पहला नोड है। एल्स में क्या करना है, एन के नेक्स्ट में हमने डाल देना है स्टार्ट, मतलब जो अभी न्यू नोड इंसर्ट किया है उसके नेक्स्ट में हमने स्टार्ट डाल देना है। यू विल रिपीट द स्टेप while t next is not equal start। अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि लिंक लिस्ट को हमें कैसे पता चलेगा कि हमने स्टॉप करना है, तो जब तक हमारा जो टेम्परेरी नोड है उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट के इक्वल नहीं हो जाता, यानी स्टार्ट मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तब तक हमने जो है वो मूव करते रहना है या लूप को कंटिन्यू रखना है। जब हमारा लूप एंड हो जाएगा तो फिर हम अभी जो नोड हमने क्रिएट किया है उसके नेक्स्ट पार्ट पे हम एन दे देंगे और हम कह देंगे एन मतलब न्यू नोड, क्योंकि हमारा स्टार्ट इज इक्वल टू एन, अब हमारा स्टार्ट वाला नोड जो है वो एन है। तो दिस इज द एल्गोरिदम। इंसर्ट एट लास्ट, लास्ट में भी हमने अगर नोड इंसर्ट करना है तो ऐसे ही करना है कि हम स्टार्ट से ट्रेवर्स करते हुए एंड तक जाएंगे। ये न्यू नोड हमने क्रिएट किया, ये उसका डेटा पार्ट, लिंक पार्ट उसका नल है, और हम क्या करेंगे कि इसके नेक्स्ट पार्ट में जो अभी नोड क्रिएट किया है नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट का एड्रेस दे देंगे, और स्टार्ट से हम स्टार्ट करके लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे, एंड तक जब पहुंचेंगे तो एंड के नेक्स्ट पार्ट में हम अभी जो न्यू नोड क्रिएट किया है ये लिंक स्टैब्लिश कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी लिस्ट के एंड में नोड इंसर्ट हो जाएगा। ये उसका एल्गोरिदम है। अब है हमारे पास डिलीशन। डिलीशन कैन बी ऑफ थ्री टाइप, फ्रंट, लास्ट, मिड। So deletion from mid in circular and linear linked list is exact same. Deletion from mid, मिड से हमने डाटा डिलीट करना है, तो हमारी जो सिंगल लीनियर लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक में ये दोनों सेम होता है। ये उसके लिए कोड है, हमने इंसर्ट एंड में जब हमने इंसर्ट करना है तो ये उसका कोड है। डिलीट का कोड भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो इंसर्ट एट एंड उसका एल्गोरिदम हमने देखा, तो यहाँ पे हम उसका कोड देख लेते हैं। क्या करना है हमने, वी नीड नोड ऑफ टाइप नोड स्टार्ट, एक नोड है हमारा स्टार्ट है, नोड टाइप का है। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ इसे डबल स्टैरिक लिखा। डबल स्टैरिक का क्या मतलब होता है, पॉइंटर टू पॉइंट